Okay, so अरे असाइनमेंट वगैरह का कुछ हुआ? अभी नहीं, अभी कुछ देखते हैं, एक आध दो दिन में कुछ मीटिंग हो रहा है, चल ही रहे। Yes, sir. So today we'll discuss relatively prime integers. This is, I think, this is also well known to you, but we are recalling here. Let a1, a2, n greater than or equal to 2 be a set of integers, okay, at least two integers. So if GCD of a1, a2, an equal to 1, the integers are said to be relatively prime. Okay, so if GCD of ai, aj equal to 1 for all I comma j, I not equal to j, the integer, then the integers are said to be relatively prime in pairs. Okay, एक साथ में सबके GCD 1 हो तो relatively prime हो. Okay, और pair wise for each pair, okay, for two different members, for each pair, if GCD is 1, then these are called relatively prime in pairs. Okay, relatively prime तो है ही. Okay, relatively prime, ये जो relatively prime in pairs are relatively prime. Okay, but relatively prime may not be relatively prime in pairs. जरूरी नहीं है कि pairs में भी relatively prime हो सकता है pairs में कोई GCD मिल जाए 1 के अलावा. Okay, so if m and r m n are integers, then r is prime to mn, this product mn, if and only if r is prime to m and n, and r is prime to n, means r is prime to m and n both, then we will say that r is prime to m into n. So let r be prime to mn. Okay, so therefore GCD of r comma mn equal to 1, relatively prime उसी के ही कहते हैं जो जिनका GCD 1. Okay, so suppose GCD of r m equal to d. एक मिनट सर, हाँ बताइए. So okay, this is now then d divides d, since d is the GCD of r comma mn, so d divides r and d divides m. Yeah. नहीं 3 है ना 3 ठीक, क्लास के बाद फोन कर. So r equal to dx and m equal to dy, so 1 equal to r x dash plus m n y dash equal to dx x dash plus dy n y. This 1 implies you see d divides r and d divides m है तो d divides mn also. Okay, so GCD of r comma mn equal to d, but GCD of r comma mn equal to 1, this implies d equal to 1. Okay, so GCD of r comma m equal to 1, and this implies r is prime to m. Similarly we can prove that r is Screen share नहीं हो रही. अच्छा शेयर नहीं हो रही. ओके ओके. हाँ बता दीजिएगा तुरंत, वो कहीं डिस्टर्ब वो होता है तो फिर. अब हो रहा है ना, आप ठीक हैं? Yes sir. यस सर. So you see आप ये लेके चल रहे GCD of r to be prime to mn, आपको प्रूफ करना है r prime to n and r prime to n. सिमिलरली दूसरा केस r prime to n and r prime to n लेके चलेंगे, आपको प्रूफ करना है r prime to mn. So r prime to mn means GCD of rmn equal to 1. Okay, so suppose GCD of rm equal to d. Okay, r को rm के GCD d है, तो rm कैसे कब when will rmn become relatively prime? Then we need to prove that d equal to 1. Okay,
If D equal to 1, then Rm will be relatively prime. Okay. So GCD of R comma M D है, so D divides R, D divides M. Okay, this is D divides R and D divides Mn. If A divides M, then its multiple को भी divide करे, it will divide. So GCD of R comma Mn equal to D. It is given to us. GCD of R Mn equal. This is GCD of R comma Mn equal to D. But GCD of R comma Mn equal to 1. So 1 we take equal to 1. Okay. So GCD of R comma Mn equal to 1. So therefore D equal to 1. GCD of R and Mn. You see R and Mn. D divides R and D divides Mn. Okay. So GCD of R comma D equal to this equal to D, but GCD of Rmn equal to 1. So D equal to 1. So GCD of R comma M equal to 1. Okay. Because it was taken GCD of Rmn equal to D. Here we prove that D equal to 1. There are some calculation also you can see. Okay. 1 equal to R x dash plus Mn. This implies this. D divides R and D divides Mn. So 1 equal to R this. Okay. For some x dash and y dash, this D of this. So D divides 1 implies D equal to 1. So R is prime to M. Similarly, R is prime to, we can prove that R is prime to M. So R is prime to M and R is prime to M. Now conversely, you take GCD of Rmn equal to R comma M1 and GCD of R comma M equal to 1. You need to prove that GCD of R comma Mn equal to 1. So this is very important result actually. In Euler's theorem or some other theorem, we will use this result very frequently. Okay. Contradictory, let GCD of R comma Mn not equal to 1. Then there exist a prime such that P divides R and P divides Mn. This implies P divides R and P divides M, or P divides N because P divides Mn. So either P divides R and P divides M, or P divides R and P divides M. So this implies either GCD of Rmn not equal to 1 or GCD of R comma N not equal to 1. So we get that if GCD of R comma Mn not equal to 1, then either GCD of this not equal to 1 or GCD of this not equal to 1. This implies that GCD of Rm equal to 1, and if GCD of Rm equal to 1, statement change कर दिया. Reverse statement is this one. If GCD of Rm equal to 1 and GCD of Rn equal to 1, then GCD of R comma Mn equal to 1. Okay. So now we will come to Euler phi function. What is Euler phi function? If n is a positive integer, we denote phi n, the number of positive integer less than n or equal to n. Less than n or equal to n, which are prime to n, means relatively prime to n. Okay. If n is a positive integer, we denote phi n, the numbers of positive integer less than or equal to n, up to equal that. Okay. So, but which are relatively prime to n. So phi 1 equal to 1, phi 2 equal to 1, phi 4, if phi 4 equal to 2, you see how it is 2. 4, 1, GCD 1, 4, 2, GCD 2. So we will not count this one. Only we will count this number. This is GCD 1. Okay, 4, 3. So GCD 1. Okay. So relatively 1 relatively 1, 4 and 4, 3. So only two numbers which are relatively prime to 4. 1 and 3. 1 and 3. Okay, 4 के साथ सबके GCD ले लीजिए. 4, 1, 1 के साथ 1, तो 1, yes, it is 1. 4 के साथ 2, GCD 2 not, GCD we need GCD 1. Okay, 3 के साथ 3, 4 with 3, yes, it is 1. So
देयर आर ओनली टू नंबर्स व्हिच आर रिलेटिवली प्राइम टू 4. वो नंबर्स दोनों क्या क्या है? 1 and 3. 1,4 1, 3,4 1, GCD 1. So only these two numbers. So therefore 5 4 equal to 2. अब ना 5 इक्वल टू 6. ये कैसे? ये 5 प्राइम नंबर है. यू सी 5 इज ए प्राइम नंबर. तो जहां प्राइम नंबर है वहां एक कम होता है. 5 ऑफ p इक्वल टू p माइनस 1. ये है 5p इक्वल टू p माइनस 1. यू सी 5 के साथ कौन कौन रिलेटिवली प्राइम है? 1,5 1. यस 1 इज रिलेटिवली प्राइम टू 5. 2,5 GCD 1. तो 2 इज रिलेटिवली प्राइम टू 5. 3,5 yes 3 is relatively prime to 5 GCD 1. 4 is also there. 4,5 GCD 1. Okay, so only 4 numbers. So that means if p is a prime number, तो उसके नीचे जितने p minus 1 मेंबर्स है, p minus 1 तक अप टू p minus 1 तक सबके साथ p के जो है GCD 1 in case of prime. I of 1. You see 1 is relatively 1. 2 के साथ relative 1. 3 के साथ 3 प्राइम हो गया. फिर वही वाला फॉर्मूला 3 minus 1 2 5 minus 1 4. जहां p है तो आंसर इज p minus 1. इतने नंबर जो है वो रिलेटिवली नंबर ऑफ इंटीजर्स, कितने नंबर है. ठीक है, ये छोटा सा रिजल्ट है. इफ p इज प्राइम एंड k ग्रेटर देन 0 देन 5 ऑफ p टू द पावर k की वैल्यू इतने हैं. p टू द पावर k माइनस p टू द पावर k माइनस 1. आपको कोई आंसर निकालना है, कोई बड़ा नंबर है. ठीक है, ये तो 5 10 2 3 हमने देख लिया. ओके, सो इससे कोई बड़ा नंबर है, 100 है, 1000 है, लाख है, कोई है 5000 है, 2000 है, तो उसमें कैसे एक एक करके चेक करेंगे कि 1 2000 के साथ रिलेटिव प्राइम है नहीं है, 2 है या नहीं, 3 है या नहीं, ऐसे कर करके हम क्या 1999 तक क्या चेक करेंगे ऐसे या 2000. ओके, सो इसका कोई फॉर्मूला है. ये वी विल फर्स्ट इसी फॉर्म के जो है p टू द पावर k है. इसके आगे भी और फॉर्मूलाज हैं हमारे पास. सो इफ p टू द पावर k हम बना सकते हैं तो p टू द पावर k into 1 minus 1 upon p. अल्टीमेटली ये फॉर्म इट रिड्यूसेस टू दिस p टू द पावर k minus p टू द पावर k minus 1. सिंपली ये आप आंसर लीजिए. ओके, सो इसका प्रूफ ये है, छोटा सा प्रूफ. Clearly GCD of n comma p to the power k equal to 1 even only with this, even only if p does not divides n. If p does not divides n, then GCD of these two equal to 1. So there are p to the power k minus 1 integers between 1 and pk divisible by p, namely p, 3p, 2p, 3p, p to the power k minus 1 into p. Thus this said, आप इसको एक एग्जांपल ऐसे लेके आप देख सकते हैं छोटे से. So thus the set 1 2 3 up to p to the power k contains exactly p to the power up to p to the power k, these numbers. Okay, so it contains exactly p to the power k minus p to the power k minus 1 integers that are relatively prime to pk. So by definition of pi function p to the power k is p to the power k minus, हमें यही नंबर चाहिए p to the power k minus p to the power k minus 1. This is equal to 5. As for example, you see 5 9 किसी p के फॉर्म में लिख दीजिए. p स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 2 माइनस 1. जो फॉर्मूला है k यहाँ 2 है तो p टू द पावर k माइनस p टू द पावर k माइनस 1. 3 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6. इसका मतलब 9 के जो है नंबर ऑफ नंबर्स रिलेटिवली प्राइम टू 9, टोटल नंबर है 6. इसको कोई नंबर लिख के देख लेना p टू द पावर k, उसके साथ कोई नंबर n के साथ इसके ये सारे p कैसे p जो डिविजिबल बाय p हैं वो दिस नंबर्स आर p या 2p 3p p टू द पावर k minus 1 into 2. इनको एंड दीज आर जनरली p टू द पावर
k माइनस 1 नंबर। देखिए 1 इंटू पी 1 पी 2 पी 3 पी और लास्ट क्या है p टू द पावर k माइनस 1। सो टोटल p टू द पावर k है हमारे पास, तो p टू द पावर k से जो डिवाइड हो रहा है वो ये नंबर है, इसको माइनस कर दीजिए। ओके, डिविजिबल बाई p, तो जहां डिविजिबल बाई p है तो उनको हटा दीजिए आप। ओके, तो ये कितना नंबर है, 1 2 3 ऐसे करके ये इसके कोएफिशिएंट देखिए, p के कोएफिशिएंट p टू द पावर k माइनस 1, इतने नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है बाई p है साथ में, तो p से डिवाइड होगा। ओके, ऑफ कोर्स। सो दीज नंबर्स आप हटा दीजिए, ये आपके रिलेटिवली प्राइम चॉइस का नहीं है। तो टोटल जो है p टू द पावर k है, उससे p टू द पावर k माइनस 1 आप हटा दीजिए। यही लिखा हुआ है यहाँ, thus the set 1, 2, 3 up to p to the power k contains exactly this number of integers that are relatively prime to p to the power k. Okay. p to the power k के साथ इसको एक एग्जाम्पल लिख के देख लेना, कोई नंबर ले लेना n इक्वल टू सम नंबर्स और फिर p टू द पावर k। Yes, you can verify it by taking a number of your choice. Okay, so result 1, if r, r plus 1, r plus 2n plus r plus n minus 1 of n and n terms of an AP whose common difference m relatively prime to n, then the remainders obtained are 0, 1, 3, up to n minus 1 in some order. These are small results, you can check these results. Okay, if r plus m, r plus 2m up to dot r plus n minus 1 m are n terms of an AP, are n terms of an AP whose common difference m relatively prime to n, whose common difference m relatively, ये common difference m है, देखिए r plus m minus r equal to m, r plus 2m minus r plus m is m, so common difference is m. AP है, arithmetic progression की बात कर रहा है। Then the remainders obtained after dividing by n to each term are 0, 1, 2, 3, 2. So if the terms these are divided by n, we get n remainders belonging to the set 0, 1, 2 n minus in some order. These remainders will be distinct as shown below. Contradictory, suppose distinct नहीं है, आप दो ले लीजिए, आप इसके इनसे डिवाइड करने के बाद दो रिमाइंडर दिस r plus xm and r plus ym have the same remainder k where x and y integers such that 0 less than this n minus 1. Thus we have let x plus equal to q1 plus k and this is equal to q2 n plus k. ये रिमाइंडर दोनों जगह हमने k ले ली। ओके, एक q1 n और एक q2 n, n से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, r plus xm and r plus ym, ये दो these two numbers have the same remainder, वो डिस्टिंक्ट रिमाइंडर है। हमने डिस्टिंक्ट नहीं, हमने कहा कि कोई भी दो नंबर क्या रिमाइंडर जो है सेम ले रहे, के ले रहे, तो क्या प्रॉब्लम आता है, देखिए this implies n divide this r plus xm minus r plus ym, x minus y, r cancel out, x minus y of m, this implies n divides x minus y of m. X minus n divides x minus y. So since GCD of mn equal to 1 and x minus y strictly less than n, x minus y strictly less than n. Okay, so this is not possible. Remainders are, therefore this is not possible. Remainders are distinct. Thus, when we divide n terms of 1 by n, then we have n distinct remainders 0, 1, 3 minus n in some order. An integer a is relatively prime to n if and only if its remainder with respect to n is relatively prime to n. Let r be remainder when n divides a. Okay. So therefore a equal to
n cube plus r 0 less than equal to this. Now this part. Let GCD of n equal to 1. Okay. We need to prove that GCD of a is relatively prime to n. GCD of n equal to 1. We need to do that n is relatively prime to its remainder. Let r be the remainder. Okay. So r is also relatively prime to n. But contradictory, we say that GCD of r comma n not equal to 1, say d. Hello? Hello? Yes? वालेकुम सलाम, क्या हुआ? हाँ, रिसीव हो गया? हाँ? हाँ, ठीक है. सो जीसीडी हमें प्रूव करना है जीसीडी ऑफ आर कोमा एन जो रिमाइंडर है उसे एन के साथ एन इज with respect to n is relatively prime to n. Okay. So contradict relatively prime means GCD 1 proof करना है. But contradictory, suppose it is not equal to 1, say different other than 1, say d. Okay. So this means d divides r and d divides n. GCD d होगा तो it will divide both the numbers. d divides a from 1. Okay. r and n. Okay. In दोनों के you see some linear combination. So therefore a divides d divides a. Okay. So d divides n, d divides n, but d not equal to 1, which is a contradiction as GCD of a n equal to 1. Okay. D divides a and d divides n. So at least GCD of a comma n is d, but d not equal to 1. Okay. So it is contradiction to here because GCD of a n equal to 1. So therefore this is not equal to 1 we take. Okay. We took this 1 not equal to 1. This leads us contradiction. Okay. So therefore this is wrong. That means GCD of r n equal to 1. Similarly, second, proof कर दो उल्टा conversely proof करिए. Let GCD of r equal to 1. We have to prove that GCD of n equal to 1. Contradictory, let GCD of an not equal to 1. Without d, but d not equal to 1. Other than 1. Okay, so d divides a and d divides n implies d divides r. So therefore d divides r. Some r can be written also some combination of a and n. So this implies d divides r and d divides n, which is a contradiction as GCD of r n equal to 1. 1 से बड़ा कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता. GCD मींस इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, बट हम कह रहे हैं कि d डिवाइड कर रहा है. देखिए d r और n को where d not equal to 1, तो 1 से बड़ा कोई नंबर डिवाइड कर रहा है जो हो ही नहीं सकता बिकॉज़ GCD of r n equal to 1. ओके, ये हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया. सो हमारा कॉन्ट्रडिक्टरी जो हमने लेट किया था GCD of n equal to d other than 1, which is wrong, means GCD of n equal to 1. These are also. So this is our main theorem. If m and n are relatively prime integers, then phi m n equal to phi m into phi. In case of this two numbers, ये जो प्रोडक्ट है जिसमें m into n है, ये दोनों नंबर्स रिलेटिवली प्राइम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अलग अलग दोनों के phi m into phi m. So this is a very big theorem. I think in the next class we will discuss this theorem. Okay? कितने लोग हैं आज?